Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann Integration. We were discussing some properties of Riemann integrations और अभी तक हमने जब फंक्शन मोनोटोनिक है या फिर कंटिन्यूअस है दोनों ही केसेस में किस तरीके से फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है इसे देखा था। इस लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऑर्डरनेस से रिलेटेड जो रूल फंक्शंस फॉलो करते हैं वो ही उनके इंटीग्रेशंस भी फॉलो करेंगे। ओके, so let us start this lecture by writing the statement of the theorem. We are having the theorem 30.4, 33.4 theorem, and it says if f and z are integrable on closed interval a comma b, and if f of x is less than equals to z of x for x in closed interval a comma b, then the same rule will be followed by their integration, that is integration of f from a to b will be less than equals to integration from a to b of this g. ओके, तो जो रूल f और g फॉलो करेंगे वो सेम रूल विल बी फॉलोड बाय दीज देयर इंटीग्रेशंस। ओके, तो जो ऑर्डर प्रॉपर्टी f और g फंक्शन के लिए डिफाइंड है वो ही ऑर्डर प्रॉपर्टी f के और g के इंटीग्रेशन के लिए भी होगी। ओके, this is the first part of this theorem, so we will prove first this one and then come to the next statement of theorem 33.4. अब क्योंकि हमें यहाँ पर दो फंक्शंस गिवन हैं, उनके बीच में रिलेशन गिवन है, तो यहाँ से वी आर कंसिडरिंग अ न्यू फंक्शन। ओके, सो लेट h be a function on closed interval a comma b such that h is equals to z minus f. Okay, we are having that this fx is less than equals to gx, then this particular quantity will be always non-negative. Okay, then we have that hx that is equal to zx minus f of x is greater than equals to 0 for all x belongs to a comma b. ओके, अब जब कोई भी हमारे पास कोई एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो उसके हम लोअर सम के बारे में क्या कह सकते हैं। सो लेट मी क्लेरिफाई दिस। सपोज दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड समवेयर दिस इज आवर फंक्शन। ओके, क्योंकि नॉन नेगेटिव है तब हम कैसा भी फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस फंक्शन के बारे में हम लोअर सम के बारे में बात करें, सो वी विल हैव द लोअर सम फॉर दिस इंटरवल, दिस इज द लोअर सम। if I talk about there, then this will be the lower sum, this will be the rectangles and so on. तो आप देख पा रहे होंगे हमेशा ये रेक्टेंगल इस एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ही रहेंगे। इसका मतलब जो लोअर सम होगा और अपर डाबो सम है दोनों ही नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ओके, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, एच एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो इट्स डाबो सम, लोअर डाबो सम, दैट इज एल एच p that is also greater than equals to 0 for every partition p of the closed interval a comma b. राइट, हम कुछ भी पार्टीशन चूज करेंगे हमेशा रेक्टेंगल हमें इसी तरीके से मिलेंगे और फॉर दैट सेंस वी कैन से द लोअर सम इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। ओके, अब जब लोअर सम की बात है और h इंटीग्रेबल फंक्शन है, क्योंकि f और g दोनों ही इंटीग्रेबल है तो इनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल होगा। ओके, तो अब ये फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि वी विल हैव दैट l of h is same as u of h and that is equals to integration from a to b of h. ये क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि f और g दोनों इंटीग्रेबल है इसलिए h भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, अब LH क्या है, LH इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल दीज वैल्यू। अगर सारी वैल्यूज हर एक p के लिए ही LHP नॉन नेगेटिव है तो इसका मतलब जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे तब भी तो ये नॉन नेगेटिव होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट सुप्रीमम
supremum of this set L H P, where P is a partition of A comma B. This is also non-negative. Okay. Now what about the supremum? Supremum is nothing but H L of H. This is also greater than equals to 0, राइट. और हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन h इंटीग्रेबल है, इसलिए ये तीनों वैल्यू सेम ही होंगी. अगर ये तीनों वैल्यू सेम ही हैं तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सिंस h is integrable, therefore integration from a to b of h, which is equal to L of h, that will be greater than equals to 0. Okay, so this is what we are having. Now the moment this h is non-negative, then how can we identify the relation between z, integration of z and h? Okay, so let me identify that. Okay, let me call this is number 1. Okay, then from 1 we can write that integration from a to b of z is same as integration from a to b of f plus integration from a to b of h, right. और ये जो इंटीग्रेशन है a to b, दिस इज नॉन नेगेटिव. इसका मतलब अगर हम इसे रिमूव करें देन this particular candidate is greater than equals to a to b of f is, this is non-negative. तो अगर इन दोनों के ऐड होने के बाद ये इक्वल है, तो अगर हम इस नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट क्वांटिटी बनेगी दैट विल बी द लेस देन इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी. ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. ओके, एंड हेंस प्रूव्ड. ओके, तो जो रिलेशन, जो ऑर्डर प्रॉपर्टी फंक्शंस में होती है वो सेम प्रॉपर्टी उनके इंटीग्रेशंस भी डिफाइन करेंगे. नाउ let us write the second part of this theorem, and it says that if z is a continuous non-negative function on closed interval a comma b, and if integration from a to b of z is equal to 0, then z is identically 0. Okay, identically 0 on closed interval a comma b. आइडेंटिकली 0 होने का सेंस क्या है? किसी भी डोमेन पर दैट इज g of x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a comma b. ओके, x की हर एक चॉइस के लिए जी एक्स में 0 मिले तब हम उसे आइडेंटिकली 0 करते हैं. नाउ कम टू द प्रूफ ऑफ दिस सेकेंड स्टेटमेंट. प्रूफ सेज, क्योंकि यहाँ पर z कॉन्टिन्यूस नॉन नेगेटिव फंक्शन है और हमने प्रूफ किया ही है कि जब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो वो इंटीग्रेबल भी होगा. अगर हम ये मान लें कि फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने, उसके नॉन नेगेटिव होने के बाद और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होने के बाद भी z 0 नहीं, आइडेंटिकली 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन पॉजिटिव रहा होगा ना, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं हो सकता, g हमें नॉन नेगेटिव दे रखा है. इसका मतलब अगर 0 नहीं है तो वो पॉजिटिव रहा होगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसका क्या मीनिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से that this is g is continuous, so it must be integrable. So let us proceed in this way. Let g is continuous on closed interval a comma b. Okay, and if let g is continuous, then z is integrable on closed interval a comma b. If this is happening, then g must be integrable on this interval a comma b. That is what we can write, that we can talk about this quantity. Okay, this particular thing exists. Okay,
अब हम ये कह रहे हैं लेट z of x is greater than equals to 0 for all x belongs to a comma b and still ये नॉन नेगेटिव है, उसके बाद भी हम ऐसा कह रहे हैं लेट दिस एंड integration from a to b of g is equal to 0. Okay, now हमें तो प्रूफ करना है कि जी एक्स आइडेंटिकली जीरो है, बट वॉट वी आर सपोजिंग दैट नाउ लेट जी एक्स और लेट मी राइट जी is not identically 0. Okay, then there exists some x not in a comma b such that g of x naught is not equal to 0. g not identically 0 इसका सेंस यही हुआ। अब क्योंकि g कॉन्टिन्यूस है और हमने ये पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूटी हमें फंक्शन का बिहेवियर सस्टेन करती है, ये फंक्शन को आर्बिट्ररी नहीं बनने देती। इसका मतलब इस पॉइंट x नॉट का हमें एक ऐसा निब्रुड मिलेगा जिसके लिए ये हमेशा सेम बिहेवियर शो करेगा, राइट? और मोर प्रिसाइजली लेट मी write this line in another way. If g of x is not equal to 0, then that is what we can say gx naught is greater than 0, क्योंकि नॉन नेगेटिव हमें दे ही रखा है। So when this g at x naught is positive, so what we can say कि g की कंटिन्यूटी हमें ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगी कि x नॉट का ऐसा नेबरहुड मिलेगा जहाँ पर ये g पॉजिटिव है, या इसको और प्रिसाइज वे में कहें तो हमें एक ऐसा अल्फा पॉजिटिव मिलेगा जिससे हमेशा gx की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी एंड वी कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई सच नेबरहुड ऑफ x नॉट। ओके, सो लेट मी राइट, सो देयर exist a neighborhood, let me write the neighborhood as c comma d of x naught in the closed interval a comma b such that this g of x is greater than alpha for all x belongs to this neighborhood c comma d of x naught. Okay, we can always identify this, right? ये सब हम क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि हमने सोचा है कि g x नॉन आइडेंटिकली जीरो है। ठीक है, नाउ इफ वी आर हैविंग दिस कंस्ट्रक्शन देन now what about this integration a to b of z, that is always we know that if we are identifying the integration from a to b and then identifying the integration from c to d, so this is always greater than equals to integration from c to d of this is z, right? क्योंकि हमने डोमेन को कम कर दिया, दिस सी डी कंटेंड इन द क्लोज इंटरवल a comma b. Now whenever the choice of g is choice of x coming from c comma d, then this is always greater than alpha. So can we replace for the choices of x this g by alpha? ओके, यहाँ पर जो इनपुट आएंगे x वो c कोमा d से आएंगे, और जब इनपुट c कोमा d से है तो वो gx हमेशा पॉजिटिव है, राइट? तो पॉजिटिव में वो वैल्यू को हम अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन सी टाइम डी ऑफ अल्फा। अब ये रिलेशन हमने कैसे लिखा है? वी जस्ट प्रूव्ड कि जो रिलेशन फंक्शंस के बीच में होते हैं वही उनके इंटीग्रेशंस के बीच में होंगे। इसका मतलब अगर इस अल्फा को हम कांस्टेंट फंक्शन सपोज करें तो जी एक्स और इस अल्फा फंक्शन के बीच में जो रिलेशन है वही इनके इंटीग्रेशंस के बीच में होगा। Now from the integration this is nothing but alpha time d minus c. Obviously this is d minus c time alpha, this will be positive. Okay, that is alpha a to b of g is greater than 0, but we had integration from a to g is equal to 0, so we reached a contradiction, right? और अगर ये contradiction है then thus we can say thus
G must be identically 0 on A comma B. Okay, so this is about this statement.